from the national capital itself, where the Aam Aadmi Party is protesting outside the Delhi Assembly. Let's actually pull up the audio on that one to exactly see what are the leaders who assembled. और मैं चाहता हूं कि सभी दिल्ली के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने साधन दिए हैं, वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करने भेजते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गरीबों के, मिडिल क्लास के बच्चों को भी विदेशों जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। अब सब बच्चे तो विदेश जा नहीं सकते, तो हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए। अब हम अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। वो वहाँ पे दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग लेके आएंगे। हम उन्हें फिनलैंड भेज रहे हैं। फिनलैंड दुनिया का वो देश माना जाता है जहाँ दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड में दी जाती है। तो हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड भेज रहे हैं, वहाँ से वो ट्रेनिंग लेके आए और हमारे सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को शिक्षा दें। अभी तक 1000 से ज्यादा टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की हम विदेशों में ट्रेनिंग करा चुके हैं। अब लगभग 30 के करीब ऐसे टीचर्स या प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजना था हमें। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये फिनलैंड नहीं जाएंगे और देखो अगर इनको इंडिया में ही कहीं ट्रेनिंग करा दो। ये तो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा, दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं? एलजी साहब रोकने वाले कौन होते हैं? एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को? मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ इस बात से कि एलजी साहब दिल्ली के लोगों की बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते। मैं आपको पकड़ना एक बार, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आया हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये देखो, सारे जने कैमरे पे दिखा दो, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को बोला था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये देखो, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये 2 बार लिखा, उनको पता था एलजी एक बार में नहीं मानेंगे। एक तो उन्होंने 284 नंबर पैराग्राफ में लिखा और एक उन्होंने 475 नंबर पैराग्राफ में फिर लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजन। इसमें लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं? वो क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमें बेहद दुख है कि आज हम सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। अगर दिल्ली का चुना हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने वोट डाल के अपने मुख्यमंत्री को चुना, 70 में से 62 सीट दी, वो मुख्यमंत्री अगर अपने शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग नहीं भेज सकता, तो फिर क्या फायदा है ऐसे चुनाव का और क्या फायदा है जनतंत्र का? अभी हम सारे जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब को अपनी गलती का एहसास होगा और वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए जाने दें। बहुत सारे काम इन दिनों में एलजी साहब ने, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लासेस रोक दी। बताओ, योगा क्लासेस रोकने से एलजी साहब को क्या फायदा हुआ? 17,000 लोग डेली योगा करते थे, मैं उनको फ्री में योगा कराता था। एलजी साहब ने अफसरों को बोल के दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की सारी पेमेंट रुकवा दी, दवाइयां रुकवा दी, टेस्ट रुकवा दिए, डॉक्टरों की तनख्वाह रुकवा दी, मोहल्ला क्लिनिक का रेंट रुकवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक का बिजली का बिल रुकवा दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी। इस बार हम चाहते थे 24 घंटे पानी और यमुना की सफाई के ऊपर मिशन मोड में काम करना, तो हमने कई हजार करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए रखे थे, कोई पेमेंट नहीं होने दी दिल्ली जल बोर्ड की। एलजी साहब ने डीटीसी के बस मार्शल, जो हमने महिलाओं की
सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए हैं डीटीसी की बसों में, उनकी 3 महीने से पेमेंट नहीं होने दी। पता नहीं कितने सारे काम एलजी साहब ने रोक दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एलजी साहब कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते, तो फिर एलजी साहब ये सारे काम कैसे रुकवा सकते हैं? अभी एलजी साहब के पास जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट, मेरी अपील एलजी साहब से एक ही अपील है, संविधान को माने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। जब मैं परसों मिला, कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय है। मैं एलजी साहब से कहूंगा एक अच्छा एडवाइजर रखें जो संविधान समझता हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट को समझता हो। एलजी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सबके ऊपर बाध्य होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। सीधे यहीं से चल रहे हैं, कोशिश करेंगे। The Aam Aadmi protest there led by the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, taking this across to Rupashri Nanda, who's joining us. Rupashri, essentially the Aam Aadmi Party protesting against the 30 teachers who they had advised should be sent to training to Finland. That proposal has apparently been rejected by the Lieutenant Governor. This is, I believe, something that has been a bone of contention for about a couple of days now. Yes, if you look at all the placards that have been held by the Aam Aadmi Party and their MLAs, then they are clearly targeting the Lieutenant Governor for stopping the teachers to go on a training in Finland. Now, on this particular allegation by the Aam Aadmi Party, actually the Lieutenant Governor's office had responded by saying that the Lieutenant Governor's office has actually not stopped it, but had asked for a cost-benefit analysis. But Aam Aadmi Party's Deputy Chief Minister actually said that when you ask for a cost-benefit analysis on such subjects, it is essentially stopping the project altogether from taking off. So this is the latest flashpoint between the Aam Aadmi Party's government and the Lieutenant Governor's office. But remember now, Chief Minister Arvind Kejriwal spoke to the media, and he actually said, on record that कानून बनता है, देश में वो कानून होता है, तो ये ठीक नहीं है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके टीचर्स, सरकारी टीचर्स फिनलैंड जाएं ट्रेनिंग के लिए, तो एलजी साहब के पास में रोकने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार को एक ही मुख्यमंत्री मौजूद है, तमाम विधायक। ये गलत है ना। एलजी साहब को सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए, एलजी साहब को कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए। दिल्ली के रुके सर। Rupashri, I'm so sorry we had to interrupt you there since Manish Sisodia was speaking. In fact, at a press conference, Mr. Sisodia himself had mentioned on how so far around 1,100 teachers have undergone training abroad, and they've been sent to countries like the UK, they've been sent to Finland and also Singapore. So why this problem with the 30 other teachers, that proposal that the Aam Aadmi Party government has sent to the LG? Well, the Lieutenant Governor, if you look at the clarification that has come from the Lieutenant Governor's office, they have clearly said that they have not stopped it completely. They have asked for more, clarification on the proposal itself, particularly on a cost-benefit analysis. The Lieutenant Governor's office has also asked the Chief Minister's office in order to find out whether these teachers can be sent for training within the country with similar, benefits. But Aam Aadmi Party's government, as you yourself pointed out, has already made the point that we have sent teachers for training to Finland abroad. संवैधानिक पीठ ने कहा है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा बाकी सब मुद्दों पर एड एंड एडवाइस कैबिनेट की बाइंडिंग है एलजी साहब पे। तो वो कैसे रोक रहे हैं हमारी फाइलें? वो कैसे शिक्षकों को फिनलैंड जाने? मुख्यमंत्री खुद इसमें हिस्सा ले रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भी जाना बिल्कुल कर रहे हैं। जब असंवैधानिक के लिए भेजना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग को वो ना रोकें। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है जिसमें साफ साफ ऑर्डर में 2 जगह लिखा है कि दिल्ली के एलजी को कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की पावर नहीं है। एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। क्या कुछ आप लोगों की मांग है, किस तरीके से एलजी तक आप लोग पहुंचेंगे? हमारी मांग है कि हम अपने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते हैं। उनको ट्रेनिंग के लिए जाने दिया जाए, उनको ना रोका जाए। उनको रोकने से एलजी साहब को क्या मिलेगा? और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2018 का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, वो ये कहता है कि दिल्ली के एलजी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की कोई सर,
Rupashri, if you're still with us, this protest continues. The march by the Aam Aadmi Party leaders and members, along with Manish Sisodia and Arvind Kejriwal, is continuing outside the Delhi Assembly. However, they are going on to continuously rake up the issue, also talking about how the Supreme Court, despite the nod by the Supreme Court, the Delhi LG is stalling this entire decision. If you can actually take our viewers to the background on why, when 1,100 teachers were already sent abroad for training, why has this 30 teachers batch been a bone of contention? Well, the first point I would like to make is the news point that is, happening over here. Arvind Kejriwal, along with Manish Sisodia, and their MLAs have actually now walked out of the Delhi Assembly and are marching towards the Lieutenant Governor's office. Now, once they reach over there, Chief Minister Arvind Kejriwal will try and meet the Lieutenant Governor once more, because last time they had met on Friday, and he's trying to go meet. He will try and meet the Lieutenant Governor if the Lieutenant Governor allows for a meeting, and then perhaps make the same arguments as he had made before. Now, as the Chief Minister has been pointing out again and again, in his meetings with the Lieutenant Governor, in his press conferences, on the floor of the House, that except for land, police, and public order, on every other issue, the elected government of Delhi or the Council of Ministers has the decision-making power, and the Lieutenant Governor of Delhi will have to act on the aid and advice of the Council of Ministers. The other important point to note is that it had also been spelled out in that judges of the Supreme Court that if there is a conflict of interest or if there is a difference of opinion, then the Lieutenant Governor's office may send that in the of their cases to the president, and then the president is going to take a call on that. But all of those things are not happening because the Lieutenant Governor's office actually clearly believes that the Lieutenant Governor of Delhi is acting as per the Constitution. In fact, he is the one who is upholding the Constitution. So over here, there is a difference of opinion or interpretation in the manner in which the Lieutenant Governor's office is interpreting the Constitution and the Supreme Court's order. And the Chief Minister's office is also doing the same. The most important news point is, remember Arvind Kejriwal always took the protest, before he became the Chief Minister, and even during the first tenure of his holding the Chief Minister's office. But now this is after a very long time that the Chief Minister himself has taken to the roads and is leading his party members on a protest to the Lieutenant Governor's office. In fact, the last time that it had happened, actually, he, along with his ministers, Manish Sisodia, Satendra Jain, had held a dharna inside the Lieutenant Governor's office. And then the Lieutenant Governor, of course, was Anil Baijal. And that issue was on the clearance of the files relating to CCTV cameras. So the Chief Minister and his ministers, they sat on an indefinite dharna inside the Lieutenant Governor's office. For over 10 days before those files were Rupashri, I request you to stay on with us. Mr. Harish Khurana of the BJP is now joining us on the broadcast. Mr. Khurana, first of all, how do you see these protests? There have been 2 days back also Aam Aadmi Party leaders like Atishi protested outside the LG's residence. Now there is a march that's been led by the Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, towards the LG Niwas. How do you see this way of protesting when it comes to the training of teachers and sending these batch of 30 teachers to Finland, which is the proposal that the Aam Aadmi Party government has sent to the LG? See, Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal doesn't believe in the constitutional authorities. What LG has demanded, he just asked a clear-cut cost analysis sheet of the people you want to send in. Why have you taken on my ego? Why are you not giving it? What is the reason behind it? Point is, you don't want to, you're not doing a work, you don't want to do a... Mr. Khurana, there's a problem with Mr. Khurana's audio link. We'll try and get that re-established. However, let me see if I have Rupashri, my colleague, still with me. Rupashri, are you there? In fact, we are now just inching closer to the Lieutenant Governor's office. The Chief Minister, along with Deputy Chief Minister and his other MLAs, are actually marching down on the road to the Lieutenant Governor's office. As I was pointing out, this particular protest march by Arvind Kejriwal, this manner of his protest, by the Chief Minister comes actually after a very, very long time. As I have been pointing out, the last time it had happened was, years back, when the Chief Minister, along with two of his ministers, had actually staged a dharna
inside the Lieutenant Governor's office. They went to meet him, and when the work did not, did not turn out as expected, they just refused to come out of the Lieutenant Governor's office and go back to their residences. They just stayed over there until the files were actually cleared by the Lieutenant Governor. Then the Lieutenant Governor was Anil Bajal, but this time. Okay, Rupashri, stay on. I have to take this across to Mr. R.P. Singh of the BJP, who is also now joining us. Mr. Singh, we were just speaking to your colleague, Mr. Khurana, as well. The point that he was also essentially making is how, Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party has taken it upon their ego and not really taking the proposal or probably the suggestions, I beg your pardon, that have been sent by the Raj Nivas vis-a-vis sending the proposal back, not essentially rejecting it as per the communication that's been received by the LG's office. I think we have lost that link with Mr. R.P. Singh. I'm going back to my colleague Rupashri. दरअसल ये आरोप लगाया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि शिक्षकों को फिनलैंड जाना था ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि फिनलैंड माना जाता है कि वहां पर बहुत अच्छी शिक्षा है। यही बात मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर की और उसी ट्रेनिंग को उपराज्यपाल की तरफ से रोका गया। उसके अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद विधायकों के साथ एलजी आवास, जहां वो मिलने की कोशिश करेंगे राज्यपाल से, और ये मांग करेंगे कि जो शिक्षक फिनलैंड जाने थे उनको वहां जाने दिया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री पैदल मार्च कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा से एलजी हाउस तक, तो ऐसे में बड़ा सियासी घटनाक्रम दिल्ली में देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल दफ्तर के बीच लगातार टकराव की स्थिति देखने को मिल रही थी। लगातार दिल्ली की सत्ता में किसकी कितनी हिस्सेदारी, एक टकराव की दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच दिखाई दे रही थी, और अब ऐसे में वो टकराव की स्थिति जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद उसका नेतृत्व कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ, तो अब लगातार अरविंद केजरीवाल एलजी हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। That was the report that one of our colleagues from News 18 India had filed for us. This is, of course, while Arvind Kejriwal, along with his deputy, Mr. Manish Sisodia, is walking towards the Lieutenant Governor's office in the national capital. Rupashri Nanda continues to be with us. Rupashri, we've had members of the BJP also respond to this march, and they are calling it an ego tussle that Arvind Kejriwal and Manish Sisodia have decided to actually, call up against the LG. Okay, I don't think we have Rupashri at the moment. We will try and get more members of the Aam Aadmi Party and also the BJP. I believe R.P. Singh is back with us on the broadcast. Mr. Singh, the point that I was essentially making and asking you, we also had Mr. Khurana join us a short while ago. Now, he had mentioned that despite certain suggestions that were sent out to the Aam Aadmi Party government and in turn Mr. Kejriwal, those suggestions have not been taken the way they should have. And there has been a lot of flexing of ego that's happening vis-a-vis the Aam Aadmi Party. Your words, sir. Is it the question to me? Yes, Mr. Singh. The problem with Aam Aadmi Party is they are not prepared to tackle the basic core issues, and they are trying to divert the issue towards the LG, because LG is asking them to work under the framework of the Constitution and under the framework of the NCT law. The basic issue is, do Delhi have principals? Almost more than 70% schools don't have principal. Do Delhi have vice principals? Almost 45% schools don't have vice principals. There are more than 16,832 teachers which are still to be confirmed, which are on a muster roll in Delhi schools. So these are the core. I mean, you want to send your teachers to Finland, Singapore, do that. But before that, at least ensure that schools have the science and commerce as a subject in the school. I mean, almost more than 70% schools don't have science and commerce as a subject in Delhi. Okay. So what are we looking for? I mean, we don't have basics, and we don't have basic, and we are talking about sending of teachers abroad. Okay. So essentially, Mr. Singh, you are saying that the establishing of the credentials of the institutions that these 30 teachers represent, that needs to be done first before there is a go-ahead or a nod that needs to be given for the teachers to be sent to Finland. Is that right? Let me rephrase it. I mean, once you do a expenditure on behalf of Delhi taxpayers' money, exchequer money, then you are supposed to do the audit for it. Okay. I just now told you
there are 70% schools don't have principals in the school. So what should be priority? I mean, sending a teacher to Finland or appointing principal in the school or appointing vice principal in the school. There are 45% don't have vice principals. Similarly, 70% schools don't have science and commerce. But what are we heading towards? What sort of society we're building up? मिस्टर सिंह, तो ये परेशानी तो पहले भी थी दिल्ली स्कूलों में जिसकी बात आप कर रहे हैं, बट वी हैव हर्ड अ वर्ड, देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने की थी. उन्होंने बोला था कि इसके पहले भी हम 1100 टीचर्स को भेज चुके हैं, ना सिर्फ फिनलैंड भेजा है, यूके भेजा गया है, सिंगापुर भेजा गया है. उस समय कोई परेशानी क्यों नहीं हुई? नहीं, तभी तो बोला कि ऑडिट करिए ना आप. ये तो उसकी इवैल्यूएशन करिए, खर्चा करें, उसका लाभ क्या होने वाला है. जब आप वो अगर कल वहां जाकर पता कर करें कि साइंस अच्छी पढ़ाई जानी चाहिए और यहाँ पर साइंस पढ़ाई नहीं जाती, या कॉमर्स में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए और यहाँ कॉमर्स पढ़ाई नहीं जाती हो, तो एटलीस्ट जो बेसिक है आपके पास खाने को रोटी नहीं, आपके नहीं. हम तो केक की बात कर रहे हैं, हम तो और बढ़िया पिज्जा की बात करेंगे. अरे पहले दाल रोटी की बात तो कर लें. But Mr. Singh, my question to you is that has the LG established this fact that this batch of 30 teachers जिनको फिनलैंड भेजने की बात हो रही है, वो उस इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिनका प्रॉपर ऑडिट नहीं हुआ है? एनी टीचर गोइंग अब्रॉड, जो जितने पहले गए थे उनका ऑडिट हुआ नहीं हुआ, यही तो इशू है. कि आप किसी को भेजो, उसकी एवेल्युएशन करेंगे तो उसका क्या लाभ हो रहा है. और दूसरा ये कि प्रायोरिटीज क्या है ये भी तो तय करें. आपके लिए प्रायोरिटीज फिनलैंड या सिंगापुर या कहीं और भेजने के हैं या बेसिक जो नीड्स है. आई एम सेइंग टेल मी which capital city will have no commerce and science being taught in the school. Okay. आप बताइए, साइंस और कॉमर्स के बिना कैसे आप देश चलाएंगे जी. Okay. One last question that I'd want to ask you, Mr. Singh. The Delhi Assembly winter session has begun today. Till Wednesday, I believe it will extend by a few more days depending on the exigencies of business. However, if this is what is going to go on in the national capital, how is it that any of the work will be done? Well, it's up to the speaker and up to the chief minister to conduct the house. Our members asked for a debate on pollution. Pollution is a bigger priority than anything else in the world today for Delhi. Because whole of this winter season, not only winter season, whole of the year itself, the air AQI level is above 250. So what are we breathing? What are we giving to our children? And then whenever our leader of the house has suggested for a debate on this, they said, no, we don't want to debate on this. Why don't you want to debate pollution as a key issue when there's a red alarm already being raised every day on the pollution as a subject in every newspaper, in every social media, in every media otherwise also. But they don't want to discuss that. Okay. Where are those buses which are supposed to be for Delhi? Delhi needs something 15,000 odd buses. You get some 50 buses from central government. You publicize it as you got your own buses. Put together, there are not more than 4,000 buses even today. Okay. So who's talking about? Give me a second. What about the air pollution and what about the soil pollution, dust pollution in the environment? There's no way out. I mean, they were supposed to do mechanized sweeping in the city. But where is the mechanized sweeping? Where are those the machines which are to be put for taking care of the pollution? None. There's only one in CP, and that too doesn't function. That too has been sponsored by Tata. Okay, so you are essentially saying that the Aam Aadmi Party government is not willing to talk about the issues that the BJP deems necessary to be spoken about. However, we leave it at that. Mr. Singh, thank you so much for joining us. We'll go back to this march, this protest march that Arvind Kejriwal, along with his deputy, Mr. Manish Sisodia, is doing with members of the Aam Aadmi Party. They've taken to the streets. This march was started from outside the Delhi Assembly. Now it is about to reach the Raj Nivas. The essential bone of contention is a batch of 30 teachers, the proposal of which that they needed to be sent for training to Finland was sent to the LG. The LG, however, has sent back that proposal, and there was a communication that was put out by the Raj Nivas, and it said, and I'm quoting it, that the LG has not rejected the proposal for the training program for primary in charges in Finland. Any statement on or to the contrary is misleading and mischievously motivated. That was the communication that came out of the governor's office. However, members of the ruling Aam Aadmi Party that were led by Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, also Atishi,
all of them are now participating in this protest march. There was a protest that had happened 2 days back also outside the LG's residence over this very issue. That was led by Atishi, and today the Delhi Chief Minister has taken to the streets. He in fact is leading that protest march. Now, addressing a press conference, Arvind Kejriwal had earlier said that the Lieutenant Governor twice had returned the file that contained this very proposal, and this was a proposal, of course, to send the Delhi government school teachers to Finland for training, asking if it is a cost-benefit analysis of the program, whether that has been done or not. On the basis of that, that entire proposal was sent back. This is what is the word that even Arvind Kejriwal had put out over there. And now he's questioning that very move of the LG and protesting with banners. All the members of the Aam Aadmi Party, workers of the Aam Aadmi Party, along with leaders which are, going ahead and marching along with the Delhi Chief Minister and the Delhi Deputy Chief Minister, Manish Sisodia. They're all marching towards the Raj Niwas. Let me take this across to my News 18 correspondent, Mr. Javed, who's joining us on the broadcast. Javed, क्या हो रहा है अभी? पहुंच चुके हैं वो राज निवास तक? देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी रास्ते में है एलजी हाउस के। दिल्ली विधानसभा से वो मार्च कर रहे हैं। साथ में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी हैं और तमाम जो विधायक हैं वो भी हैं। दरअसल मुद्दा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो तख्ती हाथ में मुख्यमंत्री ने ली है, जो फिनलैंड में शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी थी, दिल्ली सरकार के शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए जाना था। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का यह आरोप है कि वो फाइल एलजी हाउस की तरफ से रोक ली गई और उसी को लेकर आज दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक वेल में उतरे और जिसके बाद यह फैसला किया गया कि मार्च किया जाएगा एलजी हाउस तक, इस मांग को लेकर कि जो दिल्ली सरकार के शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। आप विजुअल में देख सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद हैं यहाँ। देखिए जी, लगातार डिप्टी सीएम भी चल रहे हैं और तमाम विधायक मौजूद हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार टकराव की स्थिति एलजी हाउस और दिल्ली सरकार के बीच देखने को मिल रही थी। दिल्ली सरकार की शक्तियों में एलजी आवास की कितनी हिस्सेदारी है, सरकार की हिस्सेदारी है, इसको लेकर लगातार टकराव देखने को मिल रहा था और अब ये टकराव सड़क पर दिख रहा है। सर, यहाँ पर देखिए अरविंद केजरीवाल Javed, they're trying to actually get us some reactions. Javed, LG का टसल आम आदमी पार्टी से तो बरकरार है, लेकिन जितने भी रिएक्शंस हमें इस प्रोटेस्ट मार्च से मिले हैं, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से हमारे कैमरा से बात की है, उन्होंने ये बात एक सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कही है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। एलजी आवाज से ये बात सामने आ रही है कि हमने रिजेक्ट नहीं किया है, हमने पूछा है कि इसका कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस हुआ है कि नहीं। इसके बारे में क्या कह रहे हैं मिस्टर केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो एनालिसिस की बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका फिर एनालिसिस होना चाहिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लगातार इस ट्रेनिंग के लिए जाते रहे हैं और अब फिर से रोका गया है। तो अब वो जो मांग है वो आप देख सकते हैं, उसको कोशिश की जा रही है उसी मांग को उठाने की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे में जो टकराव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही थी, अब वो सड़क पर आती हुई नजर आ रही है। विजुअल्स देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद उसका नेतृत्व मांगा जाएगा, मिलने का अब टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, एलजी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना होगा। लेकिन जो सियासी लड़ाई है वो एक तरह से अब सड़क पर नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से चाहे वो एमसीडी में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो या फिर जो मनोनीत पार्षद है उनको लेकर कोशिश हो। फिर जी एब्सोल्युटली जावेद, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के अनिल बैजल थे, तब भी इस तरह का एक विजुअल सामने आया था जहां पे हमने देखा था, बहुत ही वायरल हुआ था वो इमेज, जहां पे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके बाकी लीडर्स सोफे पे स्टेक आउट कर रहे थे बहुत दिनों तक। ये प्रोटेस्ट का हिस्सा था। अब मिस्टर सक्सेना के साथ भी वही हो रहा है, अब ये मार्च कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनको ऑडियंस दी जाएगी एलजी की, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक उनसे मिलने की बात हो रही है, उसको लेके कोई कम्युनिकेशन तो एलजी ऑफिस की तरफ से आया नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार बात को उठा रहे हैं कि ट्रेनिंग होनी चाहिए और देखिए वो मार्च चल रहा है।
यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बात करने की कोशिश भी करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। Okay, Javed, my colleague, is trying his best to get a word from Arvind Kejriwal and Manish Sisodia and the other Aam Aadmi Party leaders who are marching towards the LG house. We, of course, will be trying and getting a sense on what exactly happens. How far are they from the LG's residence? Remember, this entire protest march is because of this entire proposal that was sent by the Aam Aadmi Party government to the Lieutenant Governor, claiming that a batch of 30 teachers of government primary schools need to be sent for training to Finland. However, that proposal was stalled by the LG, claiming that there needs to be a cost-effective way of reaching this entire exercise. And they essentially also have questioned the credentials of the institutions that these teachers belong to. Whether there has been an effective audit that has been done, on what basis have these 30 teachers been zeroed in on? All these questions still remain unanswered. I believe Javed is back with us. Javed, क्या आप मुझे सुन पा रहे? All right, we don't have that audio through. You can understand that there is a march that's constantly happening. Javed is trying to, of course, get us all the reactions from that very protest march. Let's actually once again listen in to what the Delhi Chief Minister, Mr. Arvind Kejriwal, and also the Delhi Deputy, Mr. Manish Sisodia, had to say about this entire protest march. लगभग 30 के करीब ऐसे टीचर्स या प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजना था हमें। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये फिनलैंड नहीं जाएंगे और देखो अगर इनको इंडिया में ही कहीं ट्रेनिंग करा दो। ये तो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा, दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। एलजी साहब क्यों एलजी साहब रोकने वाले कौन होते हैं? एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को? सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब कुछ ऑर्डर देते हैं तो वो देश में कानून बनता है, देश में वो कानून होता है। तो ये ठीक नहीं है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके टीचर्स, सरकारी टीचर्स फिनलैंड जाएं ट्रेनिंग के लिए, तो एलजी साहब के पास में रोकने का कोई अधिकार नहीं है। Now remember, there's been a proposal that was sent by the Aam Aadmi Party government to the Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena, who in fact returned that proposal that was about sending teachers to Finland for training. And on the basis of which this entire proposal was returned was for the Aam Aadmi Party government to have been asked to do this in a cost-benefit way. A cost-benefit analysis was sought by the LG's office, and that was the communication that was also put out. However, Aam Aadmi Party government is claiming that what is the problem if the primary school government teachers will be imparted that kind of training that is required? Why is the Delhi LG refusing that? Because this is coming out of the Delhi people's money, the taxpayers' money, and this is much required for the students who are taught by these very teachers, and hence those teachers, a batch of 30 teachers, need to be sent to Finland for training. And that exact protest march is happening in the national capital as the Delhi Chief Minister along with his deputies marching towards LZ's residence. We're slipping into a very short break, coming right back with more.